Good afternoon, ladies and gentlemen. I, Sanana Nagar, Company Secretary and Chief Investor Relations Officer, welcome you all to the 22nd Annual General Meeting of SRG Housing Finance. Dear members, considering the COVID-19 pandemic and continuing restriction on gathering of people at one place and to maintain the social distancing, this meeting has been called through video conference facility in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and SEBI. With me as a company secretary today, we have our directors in this meeting. Let me introduce them one by one. Independent Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Mr. Ashok Kabra. Independent Director and Chairman of Audit Committee and CSR Committee, Mr. Nishan Badala. Independent Director and Chairman of Stakeholder Relationship Committee, Mr. Suresh Kumar Purwal. Our Managing Director, Mr. Vinod Kumar Jain. Non-Executive Director, Mrs. Seema Jain. Non-Executive Director, Ms. Garima Soni. Members, please note that Mr. Vikas Gupta could not attend this meeting due to certain exigencies. We also have our management team with us. Our Chief Financial Officer, Mr. Ashok Modi. Chief Marketing Officer, Mr. Lavam Modia. Vice President, Business and Operation, Mr. Archish Jain. Assistant Vice President, IT, Ms. Liji Shibraman. We also have with us Mr. Rishabh Jain, Statutory Auditors, Mr. Shiv Hari Jalan, Secretarial Auditor, Mr. Prinkit Jain, Internal Auditor. Dear members, they all have joined this meeting through video conference from their respective locations. Dear members, we have the requisite quorum being present through video conference to conduct the proceeding of this meeting. As per the circular issued by MCA in Section 103 of the Companies Act 2013, participation in this meeting through video conference is being identified for the purpose of quorum. I would like to inform that with the consent of Board of Directors, Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director of the company, is being elected as the chairman for this 22nd meeting. I confirm the quorum being present and request Mr. Vinod Kumar Jain to call this meeting to order. Under his authority, I would like to take the proceedings further. I now take the regulatory matters and general instruction to members pertaining to annual general meeting. Dear members, facility for joining this meeting through video conference and other audiovisual means is made available for all the members on a first-come, first-served basis up to 1,500 members. The Register of Directors, KMPs, Register of Contracts and Arrangements have been made available electronically for inspection by the members. Members seeking to inspect such documents can send an email to Investor Relations at info@srghousing.com. The company has taken all feasible efforts under the current circumstances to enable members to participate through video conference and vote at the annual general meeting. All the members attending this AGM are by default placed on mute by the host to avoid any disturbance arising from the background noise and to ensure smooth and seamless conduct of the meeting. We had provided facility to shareholders to register themselves as speaker. However, we have not received any request or Q&A from any member. Since this AGM is being held through video conference, physical attendance of the members has been dispensed with. Accordingly, the facility of appointment of proxy are not available at this meeting. Notice of 22nd Annual General Meeting Annual Report, which inter alia comprises of the financial statement, board report, auditor's report, was circulated in advance to all the members whose email address are registered with the company or with Lincoln Time Private Limited, RTA, or the depositories. With the permission of members, I now take the same as read.
The statutory auditor report on the financial statement of the company for the financial year ended 31st March 2021 and the secretarial audit report for the said period do not contain any qualification, observation, or comments on the financial transaction or matters which would otherwise have adverse effect on the functioning of the company. Hence, the same need not be read at this annual general meeting. I would like to inform you that as per the provision of Companies Act 2013 and SEBI LODR regulations, your company has provided the facility of remote e-voting for ensuring wider participation of the members and to enable them to cast their vote electronically. As per the timeline mentioned in the notice of the annual general meeting, the remote e-voting has already concluded at 5 p.m. Indian Standard Time yesterday. Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to cast their vote electronically during the meeting. E-voting during the AGM is integrated with the video conferencing platform and no separate login is required for the same. Members can cast their vote after the window for e-voting is activated at the same time, continue to participate in the proceedings of the meeting. Once the chairman orders the commencement of e-voting at the AGM, the voting tab will be activated at 12:45 p.m. Indian Standard Time to enable the shareholders to cast their vote. Shareholders may please note that there will be no voting by show of hands. Result of the voting along with scrutinizer's report shall be communicated to BSE and will also be placed at the website of the company and NSDL within the prescribed timeline. Mr. Shiv Hari Jalan, practicing company secretary, has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Now, let's move to the agenda item for today's meeting. There are 5 agenda items for approval of shareholders in this meeting. 2 of the items are of ordinary business. First, adoption of financial statement and report of board and auditors thereon. The next one is to appoint director in place of Mrs. Seema Jain, non-executive director, who retires by rotation in terms of Section 152(6) of Companies Act 2013 and being eligible offers herself for reappointment. Moving forward, there are 3 special business for the approval of members in this meeting, which are approval for issuance of redeemable non-convertible debenture, secured or unsecured redeemable subordinate debt, Tier 2 NCDs or bonds to be passed as special resolution. Approval for appointment of Mr. Sumresh Kumar Porwal as an independent director of the company to be passed as special resolution. And lastly, approval for further issue of equity share to be passed as special resolution. The objective and implications of the resolution proposed at the AGM are already set out in the notice of AGM and explanatory statement, and for the sake of brevity are not being repeated again. Now, I would like to invite our promoter and managing director and chairman for this meeting, Mr. Vinod Kumar Jain, to address the shareholders. Over to you, sir, Mr. Vinod Kumar Jain. जय जिनेंद्र, मैं आप सभी का कंपनी की जनरल मीटिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं कंपनी के ऑडिटर्स मिसेस पी.के. जैन एंड कंपनी, सेक्रेटरी ऑडिटर शिव हरि जालान, हमारे इंटरनल ऑडिटर्स जैन कोठारे एंड कंपनी, सभी डायरेक्टर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एवं आप सभी शेयर होल्डर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड में जितने भी परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। वर्ष
2020-21 हम सभी के लिए काफी मुश्किल रहा था। पूरे वर्ष लॉकडाउन और कोविड होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई थी। मुझे खुशी है कि इतने चैलेंजिंग टाइम में भी एसआरजी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है और पिछले वर्षों की तुलना में हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। इसके लिए मैं पूरी एसआरजी टीम की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने मुश्किल वक्त में डटकर काम किया है। मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक की रिकवरी में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें लॉकडाउन पीरियड में देखने को मिला है। जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि 2019 लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए बुरा समय रहा था, जिससे हमारे बिजनेस ग्रोथ भी उस दौरान प्रभावित रही थी। ऐसे समय में सबसे बड़ा चैलेंज एचएफसी कंपनी के लिए फंड रेज करना रहा था, लेकिन उस चैलेंजिंग पीरियड में भी हम मोटिवेट रहे थे और हमने हमारे सिस्टम और प्रोसेस को अधिक मजबूत और इफेक्टिव बनाने पर काम किया था। हमारे ग्रोथ प्लान को देखते हुए हर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यकताएं थी, उन्हें पहचानते हुए उन पर काम करना शुरू कर दिया। हमने टेक्नोलॉजी पर अधिक फोकस करते हुए एसआरजी सृजन प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जो कि सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। टेक्नोलॉजी की तरफ 2019-20 में हमने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, जैसे एसआरजी सेल्स, कलेक्शंस, केवाईसी, क्रेडिट एप्लीकेशंस। इस तरह की हमने सभी मोबाइल एप्लीकेशन को चालू किया था। इन सभी की मदद से हम लॉकडाउन पीरियड में भी स्मूथ फंक्शन कर पाए थे। पिछले वर्षों में हमने कस्टमर केयर डिपार्टमेंट और लीगल काउंसलिंग की भी शुरुआत की, जिसका भी हमें बेनिफिट हमें लॉकडाउन पीरियड में देखने को मिला। काउंसलिंग टीम ने लॉकडाउन से पहले भी कस्टमर्स को रेगुलर गाइड कर रहा था और कस्टमर का विश्वास काउंसलिंग टीम पर काफी हो गया था। इसी वजह से जब एकदम कोविड आया, तब चाहे मॉरिटोरियम से संबंधित हो या किसी भी समस्या के लिए काउंसलिंग टीम ने कस्टमर्स को पूरा सपोर्ट किया और कस्टमर भी एक विश्वास के साथ उनसे बात कर पा रहे थे। एसआरजी ने अपने कस्टमर्स को ऑप्ट इन मॉरिटोरियम ऑप्शन दिया। साथ ही कस्टमर को मॉरिटोरियम पॉलिसी के बारे में भी समझाया गया। हमारे काफी कम कस्टमर्स ने मॉरिटोरियम ऑप्शंस एडॉप्ट किया था। हमारे अधिकतर कस्टमर्स सेल्फ एम्प्लॉयड और रूरल एरिया से हैं, जिनका ज्यादातर बिजनेस डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट का है और जो डेली की आवश्यकताएं हैं उनके शॉप्स वगैरह पे काम करते हैं, वो दुकानें हैं। रूरल एरिया में कोरोना की फर्स्ट वेव का प्रभाव कम रहा था, इसी वजह से लॉकडाउन के बाद उनके बिजनेस को नॉर्मल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ बिजनेस को छोड़कर बाकी सब बिजनेस जून से वापस शुरू हो गए थे, जिससे हमारा कलेक्शन अच्छा बना रहा। इसलिए हमने किसी भी बैंक से मॉरिटोरियम नहीं लिया और हमारे सभी लेंडर्स को हमने टाइम पर रीपेमेंट भी किया था। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को देखते हुए हमने टेक्नोलॉजी पर अधिक फोकस किया और हमने कई बड़ी कंपनीज जैसे अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लाया गया, जिससे कोविड और वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद भी हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में कोई भी रुकावट नहीं आई। अमेजन AWS क्लाउड में हमने लोकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर मूव किया है, जिससे हमारी इन हाउस मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुई है। कार्य क्षमता बढ़ी है। 24/7 फील्ड स्टाफ को सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही है और कस्टमर लीड जनरेशन से लेकर केवाईसी, क्रेडिट, डिसबर्समेंट और कलेक्शन तक के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया गया है। पिछले वर्षों में हमने जितना भी आईटी क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है, वो हमारे आने वाली ग्रोथ और विजन को अचीव करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी चैलेंजिंग टाइम में
चाहे कोविड हो या और कोई भी मुश्किल वक्त हो, हमारा बिजनेस बिना रुकावट के आगे बढ़ता रहेगा। मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी है कि अगस्त 2021 में हमें बैंकिंग फ्रंटियर के द्वारा बेस्ट क्लाउड इनिशिएटिव के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है। हमारी एसेट क्वालिटी और बिजनेस मॉडल पर ट्रस्ट करते हुए हमें टीएलटीआरओ स्कीम और एनएचबी स्कीम्स का भी बेनिफिट मिला है और हमने फाइनेंशियल ईयर 21 में 150 करोड़ का फंड रेज किया है। कोविड जैसा मुश्किल वक्त होने के बावजूद हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फंड हमें इस वर्ष मिला, ये हमारे हौसले को और बढ़ाता है। और आगे जो देख रहे हैं हम हमारे विजन को, उससे में भी क्लियरिटी आ गई है। हम आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और फंड की हमें परेशानी या तकलीफ नहीं आएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गवर्नमेंट और रेगुलेटर का, जिन्होंने कोविड के दौरान इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काफी प्रयास किए। जैसे कई स्कीम जैसे टीएलटीआरओ, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई, जिससे फाइनेंस इंडस्ट्री को मॉनेटरी सपोर्ट जबरदस्त मिला है। रियल एस्टेट सेक्टर को इनकम टैक्स बेनिफिट दिए गए, एस ग्रेशिया स्कीम और मॉनिटरिंग जैसी स्कीम भी लाई गई है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लिया गया। कुछ राज्य सरकारों ने प्रॉपर्टी सेल परचेज करने पर स्टाम्प ड्यूटी में भी कमी की थी। वन टाइम रिस्ट्रिक्शन स्कीम भी लाई गई है। इन सभी से फाइनेंस इंडस्ट्री को काफी लाभ मिला है। फर्स्ट ऑफ ईयर लॉकडाउन के चलते प्रभावित रहा था, लेकिन हम सेकंड हाफ में काफी अच्छा डिसबर्समेंट कर सके, जो कि पिछले वर्ष से भी डबल रहा था। कोविड ने लोगों को और अधिक जागरूक और रेस्पॉन्सिबल बनाया है। लोग अपनी छत और घर की इम्पोर्टेंस को समझे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ऑनलाइन स्कूल से सभी को अपने अपने घरों में एक्सटेंशन कराने की जरूरत महसूस हुई है। जो लोग रेंट पर रह रहे थे, उन्होंने भी अपना घर लेने का निर्णय लिया, क्योंकि कोविड से वो अगर कल ना रहे या अचानक उनकी इनकम या बिजनेस बंद हो जाने की स्थिति में उनके उनके परिवार के पास अपनी छत रहे और उनका परिवार सुरक्षित रहे। इसकी वजह से हाउसिंग बिजनेस में काफी इंडस्ट्री में काफी उठाव आया है। मेट्रो सिटीज में भी काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री सेल हुई है। इन्हीं सब कारणों से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम देखने को मिला है और फाइनेंस इंडस्ट्री में डिमांड स्ट्रांग हुई है। कोविड पीरियड के दौरान एम्प्लॉयज के लिए मार्केट में मूव करना आसान नहीं था और हमारे लिए ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण एम्प्लॉय सेफ्टी। इसी को ध्यान में रखकर बिजनेस सोर्सिंग के लिए हमने डीएस और कनेक्टर के साथ भी काम को बढ़ाया था। कोविड पीरियड में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं की गई थी। क्रेडिट, आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट सभी डिपार्टमेंट्स में सीनियर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज भी अपॉइंट किए हैं, जिनका फाइनेंस इंडस्ट्री हाउसिंग फाइनेंशियल में 30 साल का उनको नॉलेज है और 30 साल से हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी ट्रेनिंग से लेकर पर्सनल स्टाइलिंग ट्रेनिंग, ऑपरेशन ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट बिहेवियर जैसी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। हमारे 95% से ज्यादा कस्टमर ईसीएस और नेस्ट से रीपेमेंट करते हैं, जिससे भी लॉकडाउन में डिफॉल्ट रेट कम रही है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी की लोन बुक 325 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 274 करोड़ थी, जिसमें इंडिविजुअल हाउसिंग लोन 68% रहा है और लैब 32% रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष 70 करोड़ था। 12.40% के साथ हमारा लोन स्प्रेड अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा है। नेटवर्थ 93 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 75 करोड़ थी। ग्रॉस एनपीए 7.62 करोड़ रहा है, जो कि लोन बुक का 2.34% है। नेट एनपीए 1.35 करोड़ रहा है, जो कि लोन बुक का 0.46%
42% है। हमारा नीम नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12.60% रहा है, जो कि मेरा मानना है कि फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी अच्छा है। कंपनी ने हेल्दी CRAR रेशो 38% मेंटेन किया है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग मेंटेन रही है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सुरेश कुमार जी पोरवाल जी जुड़े हैं। पोरवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिछले 33 वर्षों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और वहां पर मल्टीपल फंक्शंस देखते थे और कंपनी की ग्रोथ स्टेज में इनका साथ हमें काफी मदद करेगा। CSR की बात करते हुए ये बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन पीरियड में हमने जरूरतमंदों को खाना और दवाएं उपलब्ध कराई थी और उसी के साथ ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कंपनी ने R&T हॉस्पिटल उदयपुर में 100 सिलेंडर का एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगवाया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सबके लिए कोविड से उबरने का समय है और आपको बताना चाहूंगा कि 95% एम्प्लॉयज को वैक्सीन भी लग गई है और अब हम फिर से अपने विजन पर कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। एक बार फिर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, SRG टीम और आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का साथ बना रहेगा और हम जल्द ही आपकी कंपनी SRG को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे और जरूर आगे उसको ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Moving forward, I would like to invite our second generation of promoters, Mr. Archish Jain, VP Business and Operation, to share his vision with you all. Over to you, Mr. Archish Jain. Thank you, Sunana ma'am, for inviting me. First thing first, a very good afternoon to everyone. I wish everyone is keeping well in this tough time of COVID. My journey in SRG started 3 years back while I was pursuing my family business management. And as MD sir always says, it is important to do right things at the right time. For me, the right thing was to join the business. And when I joined, the NBFC industry was turbulent because of liquidity crunch and then COVID happened. But it was a great learning opportunity for me. So it was indeed a right time. I'd like to take you all through my journey in SRG. I've completed my graduation in global business management, and then I pursued for family business management from SPJ, and I've recently completed my master's in business administration. I'm an image consultant and a soft skill trainer. Currently, I'm looking after the business and operations of the company. But I've been a part of many projects related to optimization of processes, as Sir mentioned about the mobile applications for sales, collection, operations, LOS, and LMS. Most of my time is dedicated on the field with the ground staff. It starts from understanding the demographics, the income, the profiles of the customers of different locations to driving sales, opening of branches, recruiting of team, and most importantly, driving the company's vision. When I first went on the field, I understood how difficult it is for the rural people to fulfill their dreams of getting a house or to grow or start a business. And it is rightly said, dream comes with a certain cost. We are not only helping these people to fulfill their dreams, but we are also educating and helping them to be a part of our economic system. And I'll take this opportunity to thank the management for always guiding me and helping me grow. And if I talk about my vision and goal, I can foresee our company on the board of top 10 housing finance companies in the country. So that's about it. Thank you so much. Thank you, sir. Now, with the permission of the chairman, I will order the e-voting to be conducted on every business to be transacted at this AGM. The company had provided the facility to cast the votes electronically on all resolutions set forth in the notice. Members who have not cast their votes electronically yet and who are participating in this meeting will have an opportunity to cast their vote during the meeting through the e-voting system provided by NSDL. Members can click on Vote tab on the video conference screen
to avail this feature. Members are requested to refer to the instruction provided in the notice or appearing on the video conference page. In case members face any difficulty, they may reach out on the helpline numbers. This brings us to the end of this meeting. Before I announce conclusion of this meeting, I have a few important points to make. Members who have still not voted on resolution are requested to cast their vote on NSDL e-voting system. Let me remind you that voting will close after 30 minutes from the time of closure of this meeting. My sincere thanks to all the shareholders, members of the medical fraternity, empaneled partners, lenders, and all the stakeholders for your continued trust in us. On behalf of your company, I gratefully acknowledge the support received from government agencies at the center and states of India. I also thank all our employees across the company for their strong commitment to the values of the company and their relentless perseverance in the pursuit of excellence to deliver the best for all the customers. Thank you all present at this meeting for your cooperation for conducting this meeting in order. There being no other business, I declare the meeting as closed. Stay safe and keep good care of your health. Thank you.